Hello everyone and welcome back. I am here with the first update of Budget 2024 related to the maximum common man, the salaried. इस बजट एक मस्त झुंझुना सबके हाथ में दे दिया saying there is a tax saving of 17,500. मैं तो कहूँ 700 रुपए और ऐड कर दूं 18,200. But this additional benefit is when you opt for a new tax regime. And the high salaried new tax regime opt करना कितना आपके लिए लाभदायक है आप चेक कर चुके हो पास्ट में और हम फिर आज एक बार चेक करेंगे. यस डेफिनेटली 8-10 लाख 12 लाख सैलरी वालों के लिए या फिर उनके लिए जो और कोई टाइप के इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं करते बट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करेंगे, उनके लिए मैं नहीं कहूंगी कि गो फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम. डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम का बेनिफिट लो, बुरा नहीं है. और इनफैक्ट वन स्टेप फर्दर 18,000 का आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी दिया जा रहा है. बट फॉर अ सैलराइड ऑफ मोर देन 15 लाख 20 lakhs 50 lakhs my old tax regime still remains lucrative and I'll explain you how. Let us go to this calculation. If I go to this calculation, I am taking a salary example of 45 lakhs, keeping it below 50 lakhs ताकि मुझे सरचार्ज के जो different rates हैं उसके confusion में ना घुसना पड़े. Keeping it at 45, मेरा पुराना tax regime 45 lakhs पे 50,000 का standard deduction offer करता था. Now the standard deduction has been increased by 25,000, making it 75. And this gives you a tax benefit of 7,800 rupees. अगर उसमें मैं सेस ऐड कर दूं तो ये 8,112 हो जाता है. However, ये 75 होने के बाद, एडिशनल 25 होने के बाद भी मेरी टैक्स सेविंग्स कितनी होती है? My tax slabs also have been changed marginally. There is some 1 lakh of forward taking जो मेरा 9 लाख था वो 10 लाख हो गया. ऐसे ये करने में मुझे एडिशनल अप्रोक्सीमेटली 10-11,000 का फायदा हो रहा है. एवरीथिंग टेकन टुगेदर इज गिविंग मी अ टोटल टैक्स सेविंग्स ऑफ 17,500, जो अगर मैं सेस ऐड कर दूं तो 18,200 का सेविंग्स है. यहाँ पे अभी सरचार्ज तो ऐड भी नहीं किया है. सो 18,200 इज अ गुड सेविंग इफ यू आर गोइंग इन फॉर अ न्यू टैक्स रेजिम अर्लियर एज वेल एज नाउ. But major comparison is कि old tax regime versus new में even after this additional 18,000 का benefit, does it still remain lucrative? I would say yes. Let me explain. 45,000 की salary पे there are this मुझे standard deduction 50 ही मिलेगा, 75 नहीं मिलेगा. But against that expenses or investments like profession tax, housing loan deduction 2 lakhs जो maximum मिल रहा है, मेरा LIC, PF, housing loan principal, ट्यूशन फीस, इन सब के ऊपर एक टोटल 1,50,000 का जो डिडक्शन है. पेंशन स्कीम में एडिशनल मुझे जो 50,000 मिल रहे हैं, मेडिक्लेम ऑफ 75, बैंक इंटरेस्ट 80 TTA में 10,000. ये एक्सपेंसेस अगर मैं मिलाती हूँ इट comes to somewhere around 4,87,000. ये 4,87,000 एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक हाई सैलराइड इनकम एनी विच वेज करेगा. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन टैक्स तो इज मैंडेटरी. आज 50 लाख की सैलरी वाला डेफिनेटली हाउसिंग लोन लेकर ही अपना घर बना रहा है, तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऑफ 2 lakhs एंड हाउसिंग लोन प्रिंसिपल ऑफ 1,50,000 इज वेरी कॉमन फॉर हिम. LIC, PF, ट्यूशन फी को साइड रख दो तो भी मुझे ये 1.5 लाख का बेनिफिट तो मिल ही रहा है. पेंशन स्कीम 50,000 नॉर्मली आप आपके फ्यूचर को देखते हुए वो इन्वेस्ट कर ही रहे हो. मेडिक्लेम आज का आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और मेडिकल एक्सपेंडिचर देखते हुए एक 10-15 लाख की आप अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो 75,000 का प्रीमियम तो हो ही जाता है. एंड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 10,000 वैसे ही आपको मिल रहा है. So considering all this, my income comes down to 39,62,500 as against new tax regime of 44,25,000. अब मैं यहाँ पे जो न्यू स्लैब्स हैं
उन स्लैब्स को देखते हुए भी अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करती हूँ, मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बनता है 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 750 रुपीज, एंड न्यू टैक्स रिजीम में इट इज 10,17,500. सेस ऐड करके 10,40,780 is what my tax is in the old tax regime and 10,58,200 in the new tax regime. So a saving of 17,420. दिखने को yes the gap has become narrow, पर जैसे मैंने कहा ये जो 4,87,000 के मैंने आपको expenses या deductions गिनाए, they are some which is very normal, but anything over and above, suppose you have anything like an HRA and leave travel allowance, conveyance, or any other exempt allowances, yeah, other deductions like probably you have donated some amount to political parties or other private trusts, you have interest on education loans or any other kind of deductions which are allowable, every 100 rupees that you invest or spend in any of these, you save a direct 30 rupees of tax. So, more you start saving either intentionally or as a habit, you directly start increasing this gap from 17,400 to as much as possible, right? So now you know, even with this new SOP of 18,200, my old tax regime still remains lucrative for a high income earner. And for the lower ones, please go ahead for the new tax regime. Please don't get into any of this additional investments just to save taxes. I am sure this calculation clarifies all doubts in your brains whether to go for an old or a new tax regime. Spread the word, spread my video to all your friends, family, and colleagues. I am here to come up with other investment related tax implications which have come down like a hammer on me. Please stay tuned. Ask your friends, family, and colleagues also to stay subscribed to my channel the way you have done it. And I will come back with all of them very, very soon. Bye bye.